Hello everyone, welcome to my channel, and this is my channel about English literature. So this will be my first class in English literature section, and I'm teaching here for UGC NET exam. And if you guys are preparing for it, it is a very good place to start your preparation. So let's start with the first foundation of English literature. When it began was Greco-Roman period. So I've taken today ancient Greek literature and we'll go through the phases of literature and हम आज ये भी बात करेंगे कि कौन कौन थे उस पीरियड में or who were the most important figures. So let's first talk about ancient Greek literature. So epic foundation and cultural legacy. What were the epic foundation and cultural legacy of ancient Greek period? Because this is very important. Ancient Greek literature forms the foundation of Western literary tradition. सो ये हमारा पहला लिटरेरी ट्रेडिशन देखने मिलता है वेस्टर्न लिटरेचर में. इट इज एसेंशियल फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हिच इज वेरी बेसिक थिंग्स. एंड ग्रीक लिटरेचर इंट्रोड्यूस्ड एपिक पोएट्री, ड्रामा एंड फिलोसफी. तो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. एपिक पोएट्री, ड्रामा, फिलोसफी सभी एंशियंट ग्रीक लिटरेचर में. सो लेट्स टॉक अबाउट द थ्री बिग पीरियड्स. तीन बड़े फेजेस क्रोनोलॉजी में ग्रीक लिटरेचर को हम तीन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्काइक पीरियड. Archaic period, which was from 800 to 479 BCE. ग्रीक लिटरेचर ये ओरल ट्रेडिशन का जमाना था. इसी वक्त होमर और हेसियोड अपनी एपिक लिखी है. सो द मेजर ऑथर्स हियर आर होमर एंड हेसियोड. It was an age of oral tradition and dominated by epic poetry. So you all know that what are the epic poetry. First of all is Iliad, which is a very important, and this is the Odyssey, which is a sequel, considered a sequel to Iliad. So whenever you study for English literature, you need to understand that this is a very basic thing, but you have to know what are the adaptation of it. क्या adaptation है जो अभी चल रहा है. Like अभी क्रिस्टोफर नोलन का एक मूवी आएगा, द ओडिसी. यू गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. ओडिसी पे एक मूवी आ रहा है. और इस ये सब कैरेक्टर कहाँ अपीयर करते हैं, जैसे कि ओडिसिस का और एक नाम है यूलिसिस. ओके, यू ऑल नो यूलिसिस is a poem by Alfred Lord Tennyson, right? Another novel is also named Ulysses by James Joyce. So that's also important. तो आप लोगों को ये सब देखना होगा. जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, आपका होमवर्क है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको करना होगा. जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ एडाप्टेशन का, तो आप जाके देखिए कि एडाप्टेशन क्या चल रहा है अभी, इन लोगों का क्या बना हुआ है और क्या हुआ है. जैसे कि अगर आप देखें, यूलिसिस का बहुत सारा वर्जन अवेलेबल है, राइट? तो आपको वो सब ढूंढना होगा और पढ़ना होगा. एटलीस्ट वो देख लीजिए, बिकॉज मे बी दिस दैट विल बी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, वो डेप्थ में जाके पूछेंगे, राइट? नेक्स्ट इज क्लासिकल पीरियड. So whenever we talk about classical period, we all know that it is a period dominated drama. Okay, but it is not the only thing. So classical period, which was from 500 to 323 BCE, known as the golden age of Greek literature. So आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि किस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन एज बोला जाता है. दैट इज अ होमवर्क फॉर यू. प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मेजर डेवलपमेंट इन दिस पीरियड वेर ड्रामा, फिलोसफी एंड प्रोज. तो ये तीनों का डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन ट्रेजेडी, एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडेस. आप लोग सभी, आई थिंक सभी ने यहाँ पे सोफोक्लिस का ओडिपस टेक्स्ट तो पढ़ा होगा, बिकॉज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट. और इसका रेफरेंस हमें एरिस्टोटल का पोएटिक्स पे भी मिलता है, राइट? सो ये तो सभी ने पढ़ाई होगा कि सोफोक्लिस के बारे में. सो लेट्स टॉक अबाउट एस्किलस. ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, right? Or even tragedy, you can say. Then Euripides, the most, I think, I feel connected to it, because he is a writer who brought out human quality in his character, जो कि एब्सेंट था एस्किलस एंड सोफोक्लिस में. When we talk about comedy, there is Aristophanes, also Menander. So Aristophanes is associated with old comedy, and Menander
इज न्यू कॉमेडी। सो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। न्यू कॉमेडी ऑफ मिनांडर लेटर इन्फ्लुएंस्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ रेस्टोरेशन एज। तो ये आपको याद रखना होगा दैट मिनांडर का न्यू कॉमेडी ने इन्फ्लुएंस किया था रेस्टोरेशन एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को। When we talk about philosophy, we know Socrates, Plato, and Aristotle. The most important are Plato and Aristotle in terms of our examination point of view. They are the most important people, philosophers in UGC NET or any kind of examination. So, and lastly, we talk about the last period, which is Hellenistic period. So, in this period, we politically declined, but culturally it flourished. Okay, then Greek culture spread after Alexander the Great. So he took the accession and rise of philosophical school, Stoicism, Epicureanism, and Cynicism. This is a question, examination question. Cynicism also, it's a PYQ. So which philosophies were dominated in this period? Cynicism, Stoicism, Epicureanism are the philosophy which dominated in this period. जैसे मैंने लिखा frequently asked in examinations. Let's talk about Homer, the most important poet I feel, and he was the poet who laid the groundwork for the Westerners. So Homer, the foundation of epic tradition, regarded as the founder of Western literature. जैसे कि मैंने बोला, he is regarded as the founder of Western literature. He flourished around 8th century BCE. So BCE आपको याद रखना होगा. This means 800 years before Christ. सो ये होता है हमारा टाइमलाइन, राइट। तो ये होता है जीरो जहाँ का हुआ बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो यहाँ से आएगा एडी और यहाँ से आएगा बीसी। तो यहाँ पे समथिंग अराउंड 8th century में होमर लिख रहे थे, राइट। तो ट्रेडिशन ये बिलीव इज ब्लाइंड पोएट। सो हमें ये सुनने में मिलता है कि मे बी ही वॉज ए ब्लाइंड पोएट। we don't have any information about his life, so these are speculations. So आपको मोस्टली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उनकी लाइफ के बारे में, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो अबाउट देम. Many scholars consider Homer as a collective representation of oral tradition. राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें पता है कि इतना पुराना चीज है, कभी हमें रिटन रिटन फॉर्म में नहीं मिलती. देयर इज नो रिटन फॉर्म इन हियर. सो सभी को लगता है मे बी द पास डाउन इन जनरेशन, मे बी इट्स ए पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन, जिसको हमें होमर नाम का नाम दे दिया गया है, राइट. तो देन अभी हम बात करेंगे the oral formulaic theory के बारे में. This is very important. You guys should read more about it. It was proposed by Milman, Parry. Homeric epics were orally composed using repeated phrases and fixed epithets. So this is a oral formulaic theory by Milman, Parry. It's a very important. That's why I put here. क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने डाला, बिकॉज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. तो ये क्या बोलता है कि होमरिक एपिक्स ओरली कंपोज्ड यूजिंग, क्या यूज किया जाता था, रिपीटेड फ्रेजेस यूज किया जाता था एंड एपिथेट्स यूज किया जाता था. एग्जाम्पल, स्वीट फूटेड एक्िलस. देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलता है ओरल फॉर्मूलिक थियोरी बारे में, रिपीटेड फ्रेजेस से और फिक्स्ड एपिथेट्स से. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट. Let's talk about one of the major texts of English literature, any kind of literature, is the Iliad. So Iliad, we all know what is it. It is the final phase of Trojan War, focus on Wrath of Achilles, right? So आपको यहाँ पे भी adaptation ढूंढना होगा, जैसे कि Song of Achilles. Who has written it? It was Madeline Miller. Madeline Miller is famous writer for her work Song of Achilles. और ये किस पे based है? This is a love story of Patroclus and Achilles. So this is a homosexual love story of Patroclus and Achilles, and this is also based on Wrath of Achilles. Okay, so Madeline Miller also famous for Circe. Circe is also an important work by Madeline Miller. So talking about the Iliad, which is, I have given 2 points, which is important from UGC NET point of view, which is 20. It is consists of 24 books and 1500 lines. आपको इसको पढ़ना होगा. Read more about it. At least read the Wikipedia page. विकीपीडिया पेज आप पढ़ोगे तो यू विल गेट आइडिया अबाउट व्हाट इज इट, बिकॉज वहाँ पे आपको समर भी मिल जाएगा और आपको थीम्स एंड ऑल सब देखने मिल जाएगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वल ऑफ इलियाड, व्हिच इज द ओडिसी.
The Odyssey is also very important. It narrates that Odysseus' 10-year journey home. So इसमें Odysseus पैक करता है अपने होम की तरफ. Even mostly people have read it. So important detail यहाँ पे देखिए जो कि ऑलरेडी पूछा गया है यूजीसी नेट में, इसीलिए मैंने इसे डाल दिया है डिटेल. Odysseus was detained by Calypso on ओजिजिया आइलैंड. सो यहाँ पे आपको लोटस सीटर तो आपने पढ़ाई पढ़ाई होगा बाय टेनिसन. सो वहां पे भी ये कुछ सिनेरियो बनता है ओडिसियस एंड यूलिसिस के एडवेंचर के बारे में. सो थीम देख लेते हैं. एडवेंचर, इंटेलिजेंस, होम कमिंग, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थीम. एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर. सो दिस वाज इट अबाउट होमर. तो आपको देखना होगा जस्ट ओडिसी का विकिपीडिया पेज एंड इलियाड का एंड होमर का विकिपीडिया पेज थोड़ा सा ऊपर से देख लीजिए. दैट वुड बी इनफ फॉर दिस सेक्शन, बिकॉज वहां पे पढ़ा नहीं जाता. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अडेप्टेशन. आपको अडेप्टेशन देखने की क्या क्या अडेप्टेशन हैज बीन डन. अगर आपको चाहिए कि अडेप्टेशन में आपको बोलूं एक नया वीडियो बोल के, देन कमेंट कीजिए कि या मेक ए वीडियो अबाउट अडेप्टेशन, आई विल मेक इट अबाउट इट. So next poet is Hesiod. So there are three major poets in this period, right? One is Homer, who is Hesiod, and another one Sappho. So you have to remember Sappho was a female poet. She was a female poet from Lesbos. Lesbos, and she wrote in about lesbianism, right? लेस्बियनिज्म में उसने लिखा है. तो आप लोग अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो इन पे कर सकते हैं. शी इज अ वेरी ग्रेट पोएट. So Hesiod, the didactic poet, contemporary of Homer, major work Theogony, origin of Greek gods, work and days, emphasizes true justice, morality, and hard work. This थोड़ा सा आपको देखना है because this it has not been asked in examination. Then let's move on to the classical literature. What were in classical literature? Drama and philosophy, tragedy. Aeschylus, pioneer of Greek tragedy, very important. Sophocles perfected tragic form. Euripides introduced psychological realism. जो मैं बोल रहा था, he was a very movement started that it was not more about free will versus fate. That was always the theme. But यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा आपको यूरोपिडिस के प्ले में. आप मीडिया पढ़िए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं. That would be very good for you. So try to read if any play of Euripides. The next we have to talk about comedies. Then comedy में यहाँ पे एरिस्टोफेन्स मैंने सिर्फ दिया है ग्रीक कॉमेडी ऑन सटायर, बट यहाँ पर मिनांडर भी आप डाल सकते हैं. वो ओल्ड न्यू कॉमेडी से एसोसिएटेड है. Then talking about philosophy, we have Plato. Philosophical dialogues are important of him. And then Aristotle. Logic, ethics, and literary criticism, poetics. ये तो वो सभी को पता होगा. He is known for poetics. So let's talk about the significance of Homer. Who was Homer and why he is significant? So Homer, he was translated into English by George Chapman, and this is also very important information. John Keats, in his sonnet on first looking into Chapman's Homer, praised the translation of Homer. Homer also influence visible in Milton's Paradise Lost and Renaissance literature. जो मैं पहले बोल रहा था, which age is known age. Golden age of English literature is Elizabethan age. Elizabethan age comes under the umbrella term of Renaissance. रेनेसा के अम्ब्रेला टर्म में आता है एलिजाबेथन एज, व्हिच इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट. सो ही इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड एज पोएट ऑफ बिगिनिंग्स. तो यहाँ पे मैंने वन लाइन कंक्लूजन दे दिया है. Ancient Greek literature established the intellectual and artistic foundation of Western civilization through epic, drama, and philosophy. So this is end for today. I'll meet you in the next class. तो आप लोग प्लीज वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए. Thank you for watching. I'll meet you in the next one.